बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हमारे इस वीक के लेक्चर के कोर्स कंटेंट्स आपके सामने हैं। फर्स्ट we'll talk about finite differences, then the types of the finite differences and the relationship of finite differences with the derivatives. Then how we can write these higher order differences and how the higher order derivatives can be expressed in the form of these differences. The ultimate goal for this lecture is we are going to study the method for the solution of boundary value problem, which is known as finite difference method. So we will derive finite difference method, and then at the end I will give you an example for the finite difference method. So first of all, what are the finite differences? So a finite difference is a mathematical expression of the form f of x plus b minus f of x plus a. So from one of the values we are subtracting the other value. If a finite difference, this relationship is divided by the difference between these argumented which are added in these x value, this b and a, the difference will be b minus a. If a finite difference is divided by b minus a, one gets a difference coefficient. The approximations of derivatives by finite differences plays a central role in the finite difference methods for the numerical solution of differential equation. And of course, here we are going to discuss about especially the boundary value problems. The idea behind these finite differences and their utilization here for this lecture is we'll be solving the boundary value problem using finite difference method, and for the finite difference method we need finite differences to be replaced in place of the derivatives which will be involved in a given boundary value problem. So today the term finite difference is often taken as synonymous with the finite difference approximations of derivatives, especially in the context of numerical methods as I told you. So हमारे पास जो finite differences हैं ये initially introduce करवाए थे ब्रुक टेलर ने 1715 में, और ये बहुत लंबा अरसा स्टडी होते रहे as abstract self-standing mathematical objects in the work by the George Boole in 1860. These also were used by Milne Thomson in 1933 and Jordan in 1939. Finite differences trace their origins back to one of the most Brugge algorithms. To one of the Jost Brugge's algorithms back in 1592, and work by others including Isaac Newton. So डेरिवेटिव और उसकी शुरू वाली थ्योरी के मुतालिक आपने कैलकुलस या वहाँ पर पढ़ा होगा. So Newton has a vital role in describing all these forms for the calculus, especially the derivatives. So ये जो finite differences हैं और उनकी मदद से derivatives हैं, इसकी जो कड़ियाँ हैं वो पीछे जाकर back to न्यूटन जो है उस इरा में से, बिकॉज ये जिस इरा में किया गया है दिस इज द सेम इरा ऑफ न्यूटन. तो ये और इसकी जो हिस्ट्री हमें मिली वो सबसे पहले 1592 में ये यूज़ किए गए. नाउ फाइनाइट डिफरेंसेस, डिफरेंट टाइप्स.
Oh, we have different types. You have studied these types, in fact, in your previous course, maybe of numerical analysis in the interpolation. So here, yeah, I'm just going to describe three of the main types which are commonly considered. So these are forward differences, backward differences, and central finite differences. So now the question is, what is a forward difference? So a forward difference is an expression of the form. We call this del. So del f of x is f of x plus h minus f of x. आपको रिकॉल करवाऊं, यू नो इट ऑलरेडी, कि किसी का भी फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना तो क्या करते हैं, उसकी अगले वाली वैल्यूज, द नेक्स्ट स्टेप, जो अगली वैल्यू है हमारे पास, उसमें से उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं. दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेमोराइज दिस थिंग. सो फॉरवर्ड डिफरेंस जिसका भी लेंगे उसकी अगली वैल्यू में से उसको माइनस कर देंगे. सो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, द स्पेसिंग, द एच, ये जो हम यहाँ पर स्टेप साइज ले रहे हैं, नेक्स्ट वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू से कितना डिफर कर रही है, ये जो स्टेप साइज है हमारे पास, ये वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है. सो जब हम इसको ओमिट करते हैं तो हम इसकी जगह x की जगह पर 1 ले लेते हैं. सो फंक्शंस की वैल्यूज की बजाय अगर पोजीशंस पर जाएं तो x प्लस 1 का मतलब होगा x, अगर कोई पॉइंट है तो x प्लस 1 विल बी द नेक्स्ट पॉइंट. सो अगले पॉइंट में से प्रीवियस पॉइंट को, इनफैक्ट दीज आर द फंक्शन वैल्यूज, तो हम जिस भी वैल्यू का फाइनल फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं उस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा नेक्स्ट वैल्यू में से. सो इसलिए जो है वो एच को यूजुअली 1 लेते हैं जब ओमिट करते हैं. तो एक बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, इसको नेबुला से एक्सप्रेस करते हैं. सो नेबुला एफ ऑफ एक्स इज, जिसका बैकवर्ड डिफरेंस लेना है उसमें से प्रीवियस वैल्यू माइनस करते हैं. अगर आप इन दोनों पर गौर करें तो बात ये सेम है, बट द ओनली डिफरेंस इज हियर. यहाँ पर जिसका फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं उसको माइनस करते हैं अगली वैल्यू में से, यहाँ पर जिसका बैकवर्ड लेते हैं उसमें से उससे प्रीवियस वाली माइनस करते हैं. तो अगर आप यहाँ गौर करें कि अगर हम डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एच लें, यहाँ पर एक्स माइनस एच लें, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच. तो वो डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच वही बनेगा जो नेबुला एफ ऑफ एक्स बनेगा. सो ये इंटरलिंक्ड है, लेकिन डिफरेंसेस, फॉरवर्ड डिफरेंस जिस टर्म का लिया जाता है उसकी अगली में से उसको माइनस किया जाता है. एंड बट इन द केस ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ सर्टेन वैल्यू, you have to subtract the previous value from that value. So the finally last difference of our concern here in this lecture is central difference. So central difference of a function is given as, we come up with the central points. So the central point will be if f(x) is the first point and next point is x plus h, the middle point to that point will be x plus h by 2. So and in the similar way, the previous point, the middle of the previous point will be x minus h by 2. So the difference of these two function values gives us the central difference. Here usually we don't use the same notation here, but usually we use a central line here. So this notation is missing here. In fact, in generally we write that del. So I will correct that in PDF file. So it must be small del. So central difference notation is not this capital del, this is a small del. So I'll be using next the same difference. So I will update that value in the PDF file. So finite difference is often used as an approximation of the derivative, typically in numerical differentiation that you have studied in your previous compulsory course for the numerical analysis. जहाँ आपने numerical differentiation पढ़ी वहाँ आपने देखा होगा कि ये जो डिफरेंसेस हैं, और मैंने जैसे भी ऊपर शुरू में बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि जब उसको डिफरेंस से ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो एच आएगा. तो अगर मैं इसको एच से डिवाइड करूँ तो वो कोशेंट हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, और वो हम यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेट करने के लिए डेरिवेटिव्स को बहुत सारी जगहों पर, बट स्पेशली इन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन. सो नाउ नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप ऑफ differences with the derivative. The derivative of function f at a point x is defined as
in the definition of derivative, you know, f dash of x is limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x over h. If h has a fixed non-zero value instead of approaching 0, then the right hand side of the above equation can be written as, if you remove that limit, then f of x plus h minus f of x over h will be equal to, so look at the this part, this is equal to del f of x. So hence the forward difference divided by h approximates the derivative, which case when h is small, because we removed that limit for the case of definition. So for small h, this will approximate, this forward difference divided by h will approximate the derivative of the function. The error in this approximation can be derived from the Taylor series theorem. Assuming that this f function given is differentiable, so you can easily see that by using Taylor series expansion, in fact the Taylor series theorem, del f of x over h minus f dash x is equal to, because when you will do approximating there will be error. So in this case the error is of order h, and this error approaches to 0 as h is, for very small h this error eliminates actually. So but the main point that we should know here is error is of order h. So in the same formula this holds for the backward difference, because the only changes, as I told you in the previous slide, there is a relationship between forward and backward difference. So by using that in the case of nebula, again we come up, or we end up, you know, by Taylor theorem in the form of or error of order h. However, the central, also called centered difference, yields a more accurate approximation, since in this case the error is of order h square. So I mean this will approximate a better form of the derivative. So here I use that notation. So del f of x, this del is for central difference. So del f of x over h minus f dash of x, if approximated with the help of central difference, the error will be of order h square. So these can easily be derived from the Taylor theorem. So we are not going to discuss this in detail here. So this is just what you know. So what actually we get from here is forward difference, derivative approximation, order h आता है. बैकवर्ड को भी यूज करते हैं, ऑर्डर एच आता है. तो सेंट्रल डिफरेंस को अगर यूज करते हैं तो ऑर्डर एच स्क्वायर आता है. तो इसका मतलब है सेंट्रल डिफरेंस जो है वो बेटर अप्रोक्सीमेशन दे रहा है डेरिवेटिव की. सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स अभी हमने देखे. सो नो इन केस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, फॉर द केस ऑफ, सो on the similar way we can obtain difference formulas for the higher order derivatives. So now first look for the second order forward differences can approximate the second derivative. The relationship is you know, f double dash of x is approximated by del square f of x over h square. So this is the value of del square fx. So del square fx means the del f of x. So first you take del f of x, then again one del for del f of x. The values, you will get this answer. So on the simplification you will get x plus 2h minus 2f of x plus h plus f of x over h square. So this is the same formula which we have been discussing many times. If you look here, this is actually y2, this is minus 2y1 plus y. So binomial coefficients with alternative symbols starting from the higher decreasing one. So आप इनको उस तरह से जो जनरल फार्मूला उस फॉर्म में भी देख सकते हैं, इजीली यू कैन गेट और कंपेयर दोज. सो एक्चुअली यू नो इसके डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, उसको एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो उसकी मदद से आप सेकंड डेरिवेटिव को अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे. इसी तरह से अगर आपने बैकवर्ड को करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेबुला स्क्वायर यूज़ होगा. और नेबुला स्क्वायर के लिए फार्मूला हमारे पास वही आएगा. देखिए एक्स प्लस 2h से ही स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर here is mistake, it should be x minus 2h. Again I will correct that in PDF file. So वो x से start होगा, एक एक आप कम करेंगे तो here 2h is missing. It should be f of x minus 2h. On the similar lines second order जो है वो central difference की मदद से आप second derivative को किस तरह approximate करेंगे, तो del square f of x h square, उसी तरह del square वाला फार्मूला यूज़ किया.
So we'll get this relation f of x plus h minus 2 f of x plus f of x minus h over h square. So ये सेकंड डेरिवेटिव को सेंटर डिफरेंस से अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंसेस आएंगे. सो ये मैंने जनरल फार्मूले आपकी सहूलत के लिए लिख दिए हैं. सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, कोई भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करना चाहते हैं यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस, तो आप इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जो भी मैंने बात बताई थी कुल स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्स पावर, ये वही अल्टरनेटिव सिंबल्स हैं, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, और जितना डेरिवेटिव को अप्रॉक्सीमेट करने उतनी h की पावर आएगी हमारे पास नीचे. सो ये बात वही लिखी हुई है, डिफरेंसेस के लिए है. तो ये जनरल फार्मूला एक्चुअली फॉरवर्ड डिफरेंस का लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स का उसके एच एन से डिवाइड किया. इसी तरह ये जनरल फार्मूला लिखा गया है नेबलैन के लिए. सो बैकवर्ड डिफरेंसेस की मदद से कोई भी डेरिवेटिव आपने अप्रोक्सीमेट करना, दिस इज द रिलेशन दैट यू कैन यूज. इन द सिमिलर वे दिस इज जनरल फार्मूला, कोई भी डेरिवेटिव आपने nth डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट करना हो सेंट्रल डिफरेंसेस को यूज़ करते हुए, तो ये जनरल फार्मूला हमारे पास जिसकी मदद से हम कर सकते हैं. हमारे पास जो nth डेरिवेटिव है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एन एफ ओवर डी एक्स एन. तो अगर फॉरवर्ड डिफरेंस की मदद से करेंगे तो जैसे भी मैंने शुरू में आपको बताया था, विल बी ऑफ ऑर्डर h. In the similar way, by the backward, it will be of order h. But in case of central difference, this is of order h square. So this central difference actually gives us the better approximation. So हमने जो आइडिया यहाँ डेवलप करना था वो यही किया कि next will be using central differences. तो यूज़ क्यों करेंगे उसकी बेस मैंने आपके पास यहाँ बना दी है, वो बताने के लिए आपको कि will be using that because this is of order h square. So it will, the central difference will give you a better approximation. Now coming to the main topic, that is finite difference method. So now what is finite difference method? In numerical analysis, finite difference method are actually the discretizations that are used for solving differential equations. By approximating them with difference equations, that finite differences approximate the derivative. Since when we are replacing these derivative with the differences, finite differences, you will end up in the form of difference equations. So that's what actually I have written here, that the finite differences approximates the derivative and you will end up with in the form of a difference equation. So finite difference methods converts a linear ordinary differential equation or non-linear partial differential equations into a system of equations, and these system of equations can be solved by matrix algebra techniques. I will show you in next what actually will end up in the form of a matrix and how this matrix means we will end up in the form of a system of linear equations, and this system of linear equation can be solved by matrix algebra, and you know different methods that you can apply to solve a system of linear equations. So you know Cramer rule, Gauss elimination, Gauss order, any of the method that you want, you can use that, inverse method or someone else. So the reduction of the differential equation to a system of algebraic equations makes the problem of finding the solution to a given OD or PD ideally suited to modern computers. अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो एट द एंड द सिस्टम हमारे पास जो आएगा, तो हम उस सिस्टम को, सिंस इट्स अ न्यूमेरिकल टेक्निक एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस में वी नो कंप्यूटर्स एंड दीज प्रोग्रामिंग एंड दीज एल्गोरिथम्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स, तो हम इसको फाइनाइट मेथड जो है वो मॉडर्न सिस्टम्स के लिए बहुत सूटेबल है. ऑल दो डायनामिकल सिस्टम में जब ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स थे जिन्हें यूज़ किया जाता था, बट जब से ये फाइनाइट डिफरेंसेस मेथड्स हुए तो फाइनाइट डिफरेंस मेथड्स जो है ना इनका न्यूमेरिकल एनालिसिस में, मॉडर्न न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ है. ये डोमिनेंट अप्रोच है सॉल्यूशन ऑफ इवन आपने पीडीज भी निकालनी हो, लेकिन हेयर वी आर नॉट कंसर्न अबाउट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंस इन आवर कोर्स वी ओनली नीड द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, in fact the boundary value problem associated to the ordinary differential equation. So हम यहाँ पर जो है वो सेकेंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू ODE बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लेके जो है ना वो मैं एल्गोरिथम डेवलप करने के लिए जा रहा हूँ. बट ऑन द सिमिलर लाइंस
we can get relationship for any order of ordinary differential equation boundary value problem. सो हमारा यहाँ पर्पस जो है वो सिर्फ टेक्निक को देखना है. ये सेकंड के लिए मैं डेवलप करूँगा, लेकिन इसको आप जनरलाइज किसी के लिए भी, किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑन द सेम लाइंस. फाइनाइट डिफरेंस मेथड्स के लिए here we consider second order boundary value problem in general form. So in a second order boundary value problem in general form can be written as d2y over dx square plus px dy over dx plus qx y is equal to rx with the conditions x of a is equal to alpha and x of b is equal to beta. Since these are two different, that's why these are boundary conditions, and this differential equation together with this बाउंड्री कंडीशन इज नोन एज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की जनरल फॉर्म हमने ये लिखी है जो आपके सामने है. नाउ वी हैव सेकंड डेरिवेटिव, वी हैव फर्स्ट डेरिवेटिव. फाइनाइट डिफरेंस मेथड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फाइनाइट डिफरेंस मेथड हम डेरिवेटिव्स को अप्रॉक्सीमेट्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस. सो ये बात हमने ऑलरेडी डेवलप कर रही थी कि हम यहाँ पर जो फॉरवर्ड है उससे भी कर सकते हैं, बैकवर्ड से भी कर सकते हैं, बट सेंट्रल डिफरेंस जो है वो हमें ज़्यादा अच्छी अप्रॉक्सीमेट या डिस्क्रिटाइजेशन देती है फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स की. तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx को विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल डिफरेंस, फार्मूला क्या है? i plus 1 yi plus 1 minus yi minus 1 over 2h, since the step size here is 2, i plus 1 i minus 1. ये सेंट्रल डिफरेंस को इस फॉर्म से लिखा जा सकता है. these relations can easily be derived from the Taylor series expansion with some of the calculations. So मैंने वो ये वाली चीज़ें पीछे आपको सारा डिफरेंसेस और उनके रिलेशनशिप शो कर दी हैं, but you can easily derive these relations, so you can check the derivation of these relation. So second derivative with the help of central difference can be approximated as yi plus 1 minus 2yi plus yi minus 1 over h square. So now substituting these values of second derivative and first derivative in the original given equation. So ये values हमने substitute कर दी. Since we are using a linear boundary value problem, that's why these p and qr, p qr are actually the continuous functions on the given interval. So these can be functions of x, or either they can be constant. So here for the case I am considering these as the function of x. So substituting these values, so this is the value for the second derivative is placed here, and p is similar way, since we are discretizing, so it will be xi, and this dy over dx will be approximated with the central difference formula like this, plus qxi, and this y is discretized as yi, and this right hand side is rxi. In certain cases this rx can be 0, so for that homogeneous case when r of x is equal to these things, as we have already discussed in previous lectures in detail. So now what we are going to do, we are going to do arrange this equation in the form of, we're taking yi common, so y is here, so this coefficient, these coefficients with the yi minus 1, yi minus 1 will be getting from here, and the similar way we'll be getting yi minus 1 from here. So दो टर्म्स हमारे पास yi के साथ आएंगी, तो वो लिख के उनके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके लिख दिया. तो जो टर्म्स yi minus 1 के साथ कॉमन आई वो लिख दी, yi कॉमन लेने से जो हमारे पास टर्म आई वो लिख दी, इसी तरह yi plus 1 के बाद जो हमारे पास टर्म कॉमन आई वो लिख दिया. सो हमने इक्वेशन को अरेंज कर लिया. अब आप देखेंगे एक डिस्क्रिटाइज सिस्टम बन गया हमारे पास. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ i विल बी स्टार्टिंग i फ्रॉम 1, क्योंकि हमारे पास y नॉट ओरिजिनल कंडीशंस गिवन होती हैं. सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ i, ये जो अबव डिस्क्रिटाइजेशन है ये end up होगी in the form of a tri-diagonal system. Actually this is the system of linear equation. So tri-diagonal system क्या होता है, अभी इसकी next form मैं आपको show करूँगा. Then you will come to know why we are calling it tri-diagonal, और tri-diagonal किस किस्म का system होता है. So tri-diagonal जैसे कि नाम से पता है 3 diagonals बनेंगे. So we'll look at the system in next slide. So we'll be ending up in the form of a tri-diagonal system, and this tri-diagonal system can be solved by using any of the matrix algebra method, Cramer rule, inverse method, inversion method, any of the method you can apply to find the values of these yi's
that actually you need corresponding to the x size. So another thing is the selection of I. This is very important. So I'll be starting I from 1. Okay, fine. So how long will be going? So if our initial condition is named as y node and final condition is named as yn, so we'll be starting from node going to n. So if you look here, going to n, you need I is equal to n minus 1. सो y n तक पहुंचने के लिए आपको i को वेरी करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n माइनस 1 तक. सो ये इंटायरली डिपेंड करता है आप कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ये स्टेप साइज पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने पॉइंट्स पर दिया है. a टू b हमें अप्रोच करना है x नोड y नोड से या अदरवाइज अराउंड x नोड से xn तक आपको जाना है या y नोड से yn तक आपको जाना है. तो दरमियान में आपने कितने पॉइंट्स रखे हैं, वो पॉइंट्स का डिसीजन कहाँ से होगा, स्टेप साइज से. सो स्टेप साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बात अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल बताता हूँ दोबारा से. सो which means the nodes will depend upon the selection of h. Look here at this figure. हमने फर्स्ट पॉइंट को x नोड कहा और लास्ट पॉइंट को xn कहा और h is the step size. Okay, then as told you कि हमारा जो लास्ट हमारे पास आएगा वो xn माइनस 1 आएगा और उससे अगला जो लास्ट पॉइंट एक्चुअली जो हमें गिवन है वो हमारे पास xn होगा. तो ये टोटल पॉइंट्स पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास कितने पॉइंट्स पर गौर करें तो नोड से लेकर n तक n प्लस 1 पॉइंट्स हैं. बट द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन इन द कंडीशन, द लास्ट पॉइंट इज गिवन इन द कंडीशन. तो जो अननोन हमारे पास बच रहे हैं वो कौन से बच रहे हैं, x1 पे आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, दिस विल बी y1. सो y1 y2 y3 अप टू yn माइनस 1 ये अननोन है क्योंकि ये y नोड विच इज द वैल्यू ऑफ y एट a. लुक हियर, so yx for the given equation, so this is equal to is actually this alpha is y naught and this beta is yn, so it's the last value. So here again it's a type of mistake. It should be y of a is equal to alpha and it should be y of b is equal to beta. It should not be x of a. So it's a type of mistake. I will remove that mistake again in the PDF file. So this is removed, the first value. This last value is removed, means we know the value of y node, we know the value of yn. So unknowns are from 1 to n minus 1. So we will end up by using this, and you know this formula for h and n. By using this, you will end up in the form of n minus 1 by n minus 1 tri-diagonal system, and I will be from 1 to n minus 1 as I told you in the previous slide. So the following discretization that we get by using finite difference method, and in fact the central differences are used to approximate these values, will be getting a tri-diagonal system. And as I told you, y naught and yn are given as boundary conditions. So we'll be having n minus 1 times n minus 1 diagonal system to find out n minus 1 unknowns. Okay, so these yi's values are unknowns from 1 to n minus 1, as y naught and yn we know already. So अभी आपको जो डिस्क्रिटाइजेशन दिखाई प्रीवियस स्लाइड पे, उस डिस्क्रिटाइजेशन की मदद से हमें ये फॉलोइंग सिस्टम मिलेगा. इफ़ यू लुक एट दैट डिस्क्रिटाइजेशन, तो उसमें पहली टर्म हमारे पास क्या थी, हमारे पास उसमें पहली टर्म जो थी वो y माइनस 1 के साथ थी, और व्हेन आई विल सब्स्टिट्यूट i इज इक्वल टू 1, तो आपके पास एक टर्म y नोड वाली आएगी, एक y1 वाली आएगी, एक y2 वाली, 3 टर्म्स आएगी. बट यू रिमेंबर y नोड इज द इनिशियल कंडीशन, तो वो कांस्टेंट आएगा आपके पास y नोड, तो इसलिए y नोड को यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दिया. तो ये y नोड वाली टर्म है, ये y1 वाली है और ये y2 वाली है. इन द सिमिलर वे जब i इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो विल गेट दिस इक्वेशन. सो ये अब i2 पुट करेंगे तो पहली इक्वेशन आएगी y1 की, वो अननोन है, ये दूसरा कोफिशिएंट है y2 का, ये तीसरा कोफिशिएंट है y3 का, और ये राइट हैंड साइड है ऑन द सिमिलर वे. इसी तरह से जब आप i इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हम शुरू ही y2 से होंगे,
So the first term you will get will be y2, the next will be y3 and y4. So यहाँ पर ये हमारे पास मिसिंग होगा एलिमेंट. सो इसी वजह से जो what actually we said in the beginning is कि हमें एक ट्राई डायगोनल सिस्टम मिलेगा. सो ये है ट्राई डायगोनल सिस्टम. लुक एट दिस वन, वी आर फॉर्मिंग 3 डायगोनल्स. सो एक मेन डायगोनल है, एक उसके नीचे डायगोनल बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर जीरो. So this specific type of system is known as tridiagonal system. But if you look at the last equations in the similar way as in the first equation, you have y node, y1, y2, y1, y2 coefficient is here, y node was a constant, y node is equal to alpha. So this is replaced here. So this is subtracted on that side. In the similar fashion, when you will put y is equal to n minus 1, you will get this equation. So this is a coefficient for y n minus 2, y n minus 1. And this next will be the coefficient of yn. Since yn is equal to beta, so that's why this third term is subtracted on the right hand side. So initial condition with coefficient पहले में से माइनस हो जाता है और बाउंड्री कंडीशन इसमें से माइनस हो जाता है. जब आप सिस्टम में आई की वैल्यूज को सिंपली सब्स्टिट्यूट करके एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा इन वैल्यूज को. तो पहली इक्वेशन में y नोड कांस्टेंट है तो वो वहाँ जाके अल्फा सब्स्टिट्यूट होकर माइनस होगा, लास्ट में y n बीटा के बराबर है, वो कांस्टेंट है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया. सो ये जो हमारे पास मिला है ये ट्राई डायगोनल सिस्टम आएगा. और ये ट्राई डायगोनल सिस्टम में कितने अननोन्स हैं? n-1, n-1 टाइम्स n-1 का सिस्टम है, n-1 अननोन्स हैं, ट्राई डायगोनल सिस्टम है. आप इसको किसी भी मेथड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और ये जो कोएफिशिएंट्स की टर्म्स हैं वो मैंने आपको दोनों बता दी हैं. सब्ट्रैक्ट हमारे पास कौन सी वैल्यूज हो रही हैं दोनों साइड्स पर. To better understand the this finite difference method, we solve an example by using finite difference method. So the problem is solve this second order boundary value problem, d2y over dx square plus 2x dy over dx minus y is equal to 5x plus 1 with the boundary conditions given as y at 0 is equal to 0 and y at 1 is equal to 2. So now since we are going to solve the boundary value problem, तो जैसे मैंने शुरू में बताया the initial point is 0, the final point is 1. So इनके दरमियान कितने पॉइंट लेने हैं इसका डिसीजन किससे होगा? h से. So इस एग्जांपल में हमें कहा गया है कि h should be chosen as 0.25. So means 1/4. तो मतलब पॉइंट्स क्या बनेंगे? पहला x नोड हमारे पास 0 है, x1 क्या आएगा? 0.25, x2 क्या आएगा? 0.5, x3 क्या आएगा? 0.75, x4 will automatically will be 1. तो इसका मतलब क्या है? y नोड हमें पता है, y4 पता है, y1, y2, y3 नहीं पता. तो 3/3 का सिस्टम हमारे पास बनेगा. सो हम देखते हैं क्या है. हमें गिवन क्या है? a is 0, comparing with the general form that you previously derived in finite difference method. So comparing with this one, this is original system. A is 0, B is 1, H is 0.25. Thus, as I told you, x naught will be 0, x1 will be 0.25, x2 will be 0.5, x3 will be 0.75, and x4 will be 1. So we have solved the equation from 0 to 1. So y naught originally given is 0, y4 is given 2. So we have to find y1, y2, y3. So by finite difference method we will be using central differences approximation for the second and first derivatives. So these are the values that we use for the first and second derivative with the help of central differences. So after substituting these values, if you carefully look here, so here px is 2x and qx is 1 and rx is 5x plus 1. So using this discretization, and as we know दिस वाज द जनरल फार्मूला फॉर डिस्क्रिटाइजेशन. एक बात का ख्याल करें, हम यहाँ पर ये नोटेशंस यूज़ कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये मेमोराइज करनी पड़े और अब इसको इस तरह यूज़ करें. सिंपली गिवन ओरिजिनल इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यू विल गेट हियर. सिंस मैंने इनको पी एक्स और क्यू एक्स की फॉर्म में ड्राइव किया, डेट्स व्हाई आई एम यूजिंग दैट नोटेशन. लेकिन ये कंपलसरी नहीं कि आप इसको मेमोराइज करें. जस्ट सिंपली पुट द सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू, ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस सिस्टम. एंड सिंस I'm using the general form, so I first substitute px value, qx value and rx values. Now we also know the value of h, so now we can substitute the value of h. H is 0.25 and you will get this following form. So this is arranged in the form of yi minus 1, yi plus 1, yi. So put h is equal to 0.25. This will end up in the form of this system.
Why I'm calling this system? Since this is yi minus 1, yi and yi plus 1. For different values of I, you will be getting different equations. So now starting from I is equal to 1. Put I is equal to 1. This one will be x1. This one will be y node plus this one. This is actually what I told you in the original system. So first term in the first equation is a constant value. So this value is again constant. This y node is given. In our case, this is 0. So multiply with this 0 and now subtract it on the right hand side. So in our case, this is 0. Otherwise, if you look at the original general case, it was subtracted here. So यहाँ पर चूंकि y नॉट 0 है तो इसलिए ये ख़त्म हो गया है, राइट हैंड साइड पे -0 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा. तो पहली इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ y1 y2 आता है. Similarly, put I is equal to 2, you will get this equation. We don't know the value of y1, y2 and y3, so ये इक्वेशन सिमिलर इसी तरह से रहेगी. Now put I is equal to 3, you will get this equation. So you will get equation y2, y3, y4. No, again y4 is the boundary condition. So this was given. So is multiplied with the y4 19 and this is subtracted on the right hand side. So जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास बचती है उसमें लास्ट वैल्यू नहीं आती, सिंस हमें y4 तक ही जाना था क्योंकि h की चॉइस इस तरह से थी कि उससे हमारे पास यही बनना था. सो वी एंड अप इन द फॉर्म ऑफ 3 इक्वेशंस और 3 अननोन्स हैं. ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आई है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आई है और तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये है. इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y1, y2, y3. तो ये ट्राई डायगोनल सिस्टम ही बनेगा. आप इनको ज़रूरी नहीं है मैट्रिक्स अलजेब्रा से सॉल्व करें, आप इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से. बट द इजीएस्ट वे इज़ कि आप इनको सिस्टम की फॉर्म में लिखें, देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस these equations to find out the values of y1, y2 and y3. So now I write these equations again. So these are the equations. So first equation having y1, y2, second this one. So in matrix form we can write this equation as -33, 17 and here y3 is missing, so 0. So times y1, y2, y3. So this is the coefficient matrix and this is the constant matrix, and you can solve this by using any of the formula. So any of the method, Cramer rule, inversion method or something else. So these are the following will be the answers you will get from this system. So y1 is 0.30879, y2 is 0.73177 and y3 is 1.2958. So these are the values of y1, y2, y3, which is value of y corresponding to x1, x2 and x3. So this is the final answer. So actually this boundary value problem is solved from 0 to 1. So if you look at the values, you will again see this is actually you can get an idea about the solution. Since we know y node was 0 and we know y4 is 2 from the boundary conditions. So यहाँ पर गौर करें तो ये 0 से 0.30 बढ़ रहा है 0.73, 1.29 और y4 2 हो जाता है. तो इट गिव यू एन आइडिया अबाउट द सोल्यूशन, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि ऑल द टाइम्स यू विल गेट सोल्यूशन इन दिस वे, क्योंकि ये सोल्यूशन इस तरह से भी हो सकता है कि इनिशियली डिफरेंशियल इक्वेशन से जो y का फंक्शन सोल्यूशन आ रहा है वो सोल्यूशन इंक्रीज करे, फिर कहीं दरमियान वाली वैल्यूज में डिक्रीज करे, फिर इंक्रीज करे. तो ये अल्टरनेट भी हो सकते हैं, बट यू गेट एन आइडिया कि जो आपने सोल्यूशंस निकालने हैं वो बेटर अप्रॉक्सीमेशंस हैं या नहीं है, जस्ट टू गेट एन आइडिया. लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये सिर्फ आइडिया के लिए. सो एट द एंड यू हैव बीन गिवन एन असाइनमेंट. प्लीज सॉल्व दिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस मेथड. Here in this case px is x and qx is minus x square and rx is x cube plus 10. You are given x node is 1 and xn is 2 and y node is 0.5 and yn is 4. Since I have asked you to choose h is equal to 0.25, so I'm just going to give you a hint. You have to start from 1 and you have to go till 2. So the next point will be 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 and 2. So you will be getting at the end, just a simple for a hint, you will be ending up in the form of a 4x4 tridiagonal system. So solve that 4x4 tridiagonal system to find the value of
Y1, Y2, Y3, Y4. That's your assignment that you will submit in your Google Classroom. Thank you very much. So your questions are welcome. So you have these following forums and given through WhatsApp group and Google Classroom, so you can contact me anytime. Thank you very much. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.